कसा निघा पुढे टॉप पण मारून जाईल. आता तो टेस्टचा पोरगा आला ना एकदम सिंगल बसले त्याच्यावर काय जाईल थोडासा बुक सर आए कुछ तो बोलो. सब करके He was ideally come this side. Good evening, sir. Yes. Last time, what I was doing, geography only. हमको ऐसा जोश आना चाहिए अंदर आने के बाद फ्रेश. हाँ, tell me. I was doing geography only, ना? मनी क्रेडिट कंप्लीटेड और वो हम लोग ने वो नहीं किया SDH सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किया. Why very few students have turned up? School exams. Why this dispersion? Concentrate here. Girl come here. Let this both the girl come here. You also come forward. You also come this side. Easy for me to locate you guys, is it? Both the girls come here or here. Economics. If SHG is not complete, I'll complete that, then we'll move on. Not right. Just check in your notebook. If I've given self-help groups, I can't make it both. So we are moving with SHG. If I've given the notes, means that chapter is complete. Check in your notebook. I remember I explained and given the notes of the phase. SHG is given. Self-help groups next. Credit creation did I do of a bank? नहीं किया ना तू तेरा नोटबुक चेक करना वेरी hey guys just confirm and did we complete that that consumer rights that is only for this one right? So if SHG is not complete or did I mark it in the volume वो भी check करो. It's not a big topic. You write up and finish it up there. So then I put geography. Why not? It will take 5 minutes. Geography will happen. Geography, what was that? Manufacturing, did I complete? Did we do what is that? Minerals and energy resources. SHG हुआ नहीं हुआ nobody is confirming. So put the heading. It's better. Correct. Then SHG is spent. Put the heading in your notebook. Self-help groups. The self-help groups. Quickly settle down. One, the attendance is low. Second, people are coming late. I guess what is the reason for that? Write the heading quickly. Self-help groups. Right in the bracket. Shall I? Must. Now look here. You remember we have done 2 sources of credit. Which are they? Formal and informal. What is formal? The credit given by registered banks. What is informal? Given by friends, parties, which is more good for an economy? Formal. And especially informal, it is the one factor called money lender, which we generally feel
They are problematic. Now there are a good number of people or a separate section which neither can depend, not depend, they cannot go to this formal and informal. They have gone through a lot of troubles. So neither this source nor this source. Then for those community who are earning per day, I'm saying per day, maybe 100 rupee, maybe 200 rupee. Their question is they want to save the money. At the same time, they need some bank-like thing to support them. Do you really feel this formal bank will accept every day? मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, आप अपना account में बोलेगा ये कौन सा है? Account opening only is minimum 500 cooperative banks, and if it is Axis or ICICI, minimum 15,000. So impossible. Now he knows the trouble of this informal, especially with the money lender, correct? And then friends and relatives, nobody. Now the government of India has coined a new idea or a new group. The word itself is saying what? Self-help groups. We'll just check what might this group may be. This group may comprise of, I say 15 or 20 or close to that, maybe less or more. Huh? Can I go and call people from one community, idhar se, they will come? No. Generally, people are from the same community. Community means it's not we are dividing them on the caste system, but depends on maybe like same neighborhood. You know what is neighborhood? Working or staying together. And these are generally, I'll say this labor class people. I think Marathi mein, I'm not sure whether you heard that word. We call them as Matadi Kamgar. Yes, sir. You know who are the Matadi Kamgar? Those people who work in APMC, where the trucks come and get into the bay, their work is to just unload or just to load. अगर आपने वो सर्कल में देखा रहेगा एपीएमसी का थोड़ा अंदर एक बड़ा स्टैचू भी रहेगा इज दैट माथाडी कामगार यूनियन head correct so now we are encouraging those people, don't go here, they don't have the capacity, avoid here, let us have our own group. As a word says, they'll say per day, they'll fix it, okay? Maybe like 100 to 200 only, or 150, 50, or I'll say 200 per day. And as a member, all the 15 or 20 member will make a regular contribution, correct? Maybe out of this 20 members, if anybody needs a loan, and it's a loan of 2 lakhs, 3 lakhs, maybe like 15,000, maybe like 20,000, etc. Small amount. The amount will come from where? From the SHG itself, correct? Because this regular contribution minimum goes for a period of 2 to 3 years minimum. इसके आगे भी रहेगा तो government बोलते ठीक है, well and good. But then there is one X or Y, or I can say Y, out of these two, 20, he needs an amount of 2 lakhs as loan. Do you think then SHG has a capacity? 15-20 हजार तो SHG बोलेगा ठीक है हमारा 2 साल का सेविंग है, 3 साल का सेविंग है, and they will not charge any rate of interest. नहीं का तो पैसा है ना. But how they will arrange this 2 lakhs then? So for that, what RBI says, RBI puts up a condition. Condition of what? If the contribution is minimum of 3 years, the SHG can open an account. Account where? In the nearby commercial bank. I'm writing CB. What is CB? Commercial bank. And the account will be open in the name of whom? In the name of SHG. Why not in the name of the individuals? Because there are so many members. If you are opening an account here, what does the CB will ask for? CB will ask for all the money, correct? Which are saved and so related accounts. कितना money दिया है, कितना आपका, और किसका account में चले जाएगा? CB का account में चले जाएगा. Understanding? Am I going very slow and step by step?
Now, what this commercial bank will do? Now they will ask the requirement of whom? This one member who is asking how much rupees loan? 2 lakhs. Now the commercial bank will disburse a loan of 2 lakhs. Is it in the name of X or Y? But in the name of the SMG. So I call this is a more dynamic, more revolutionary, more independent. I mean, is आपको लगता है कि every month UT students of 10 CBSE need to have a small get together here only. तो आप लोगों से हर रोज है ना सब लोग 10-10 रुपए दे देगा month end में जितना भी होगा आप बोले no problem. Let us have a small, है ना? Don't do it. I'm just giving you an idea. Or in your own buildings. I don't know, महाराष्ट्र में VC system करके कुछ चलता है तो सब लोग 5-10 लोग मिलकर अपना अपना सैलरी सब कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे एक जन लोन लेगा और बाकी लोग बढ़ता रहेगा फिर दूसरा महीना दूसरा ऐसा कुछ VC कुछ बोलता है दोनों so this SHG is similar to that only. What is the advantage of SHG now? The people are becoming financially sound. Which people? The members. Are they running towards the banks? No need. Are they running towards the money lender? No need. And it infuses in them a self-confidence. What is that confidence? अरे कुछ नहीं यार 15-20 हजार तो हमारे SHG से मिल जाता और अभी तो हम लोग ने अकाउंट भी ओपन कर लिया कहाँ? In one of the commercial bank. Getting what I'm saying? Commercial bank, whatever. जो उनका nearby रहेगा. They will not come to cities because बार-बार उनको जाना पड़ता है ना पैसा डालने के लिए. And everyone, whoever will be contributing, directly will be contributing to the bank only now. Because उनका account अभी किधर है? Bank में. समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? So this is what an SHG is. So pick up your notebook or volume में है, or shall I give my own simple points? Huh? Write up. Huh? Functioning and advantage of an SHG. Functioning, write on the subheading and advantage on SHG. Okay. Right up. Point number 1. To reduce their dependency over, formal or informal. To reduce their dependency over formal or informal sources of finance. A new idea of SHG was introduced. Idea of to reduce the dependency. Second was introduced. His name was past tense. It mainly comprises of. 15 to 20 members. It mainly comprises of 15 to 20 members. Put a hyphen. More or less. मतलब कभी ज़्यादा भी रह सकते हैं, कम भी रह सकते हैं. More or less. Belonging to same locality. Neighborhood. Community, etc. Yeah, how do I use the word community? Am I dividing it on the caste system? कौन सा community बन मिलेगा? अब जैसे मैंने मातारी community बोला, yeah, you know there is mochi community, mochi कौन है? Cobblers, and अभी तो नहीं है. There was a time when we had a lot of dhobis in Mumbai and Navi Mumbai. You know, there is a place in Chembur Govandi area. उसका नाम ही धोबी घाट का.
ये बड़े बड़े हॉस्पिटल का बेडशीट्स है ना, तो नॉर्मली ये धोबी घाट में ही जाता है, तो बेचारे लोग जो भी नाला जैसा पानी रहेगा उसमें उनका हाथ चलता है, व्हाइट एंड ब्लैंकेट आई हैवंट सीन इज इट, अरे वो कौन सा नवा एमबीबीएस में कोई ना उसमें धोबी घाट जैसी, दैट्स नॉट ओरिजिनल धोबी घाट. But I still remember during our school days, my madam used to give technological development. Typists were used in demand. You know who is a typist? Who was a typist? जब कंप्यूटर्स आया, फिर सिस्टम में इतना सारा पैकेज आ गया, टाइपिस्ट तो खत्म. Then dhobis were highly in demand. Imagine who were thrown out of the job when washing machine came in. धोबीज होंगी. अभी कौन बोलता है अरे वो धोबी के पास नहीं, सबके पास अभी है. What does it mean? One new technology coming in, it throws some people out of the job. लॉन्ड्री आके वो भी वॉशिंग मशीन रखता है ना, वो किधर धोबी को देता है, वो आके उसके पास वो कमर्शियल वॉशिंग मशीन रखता है. He doesn't give it to धोबी. Might be the big hospital in Bombay, अभी भी वो बंद है, पर अभी पूरा वो क्लीनिंग वगैरह, हाँ पता नहीं अभी दे रहे कि नहीं दे रहे, but एक टाइम था. So we remember this system was something dynamic or revolutionary. Do you accept it as revolutionary? Why it is revolutionary? Supporting the very small people, poor people. And देखो जो भी आइडिया आप लोग नया लेकर आता ना, एंड अगर वो सक्सेस हो गया, क्या होता है? हाँ, रेवोल्यूशनरी बन गया. देन हाउ द यूज द वर्ड डायनामिक. सर क्या पता है इसी एसएचजी से एक क्रेडिट सोसाइटी बाहर आ सकता है. यू नो दिस अब्यूदा बैंक in Vashi. I still remember before 15 years or 20 years when we came to Navi Mumbai. My dad got retired and हम लोग आए, तभी ये क्रेडिट सोसाइटी था, बहुत छोटा सा था बैंक. अभी भी आप अगर उधर आप अकाउंट ओपन करेगा ना, ओनली 300 रुपीज है बस. यू विल गेट अ डेबिट कार्ड, यू विल गेट अ चेक बुक. एंड वो एकलौता बैंक है जो रात को 8 बजे तक काम करता है, मालूम है? 12:30 बंद होता है, 2 या 3 बजे ओपन होता है, एंड इट विल वर्क अप टिल 8 o'clock in the night, एक्सेप्ट ऑन संडे 3 बजे बंद होता है. Can you imagine Axis ICICI 8 बजे तक, 3 बजे हमको भगा देता और शट करना. So this is that credit society. So that credit society एक टाइम पर क्या हो सकता था? SHG. So देखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जितना आपके में माइंड में डालेगा, you are also doing some investment ना. It is helpful for the future growth of the country. रिक्शा वाला they won't have a लोन पकड़ देते. रिक्शा वाला उसका वो रहता है, ऑटो स्टैंड का काम, उनका वही जगह रहता है. वो कुछ फाइनेंस तो आजकल बैंक से मिल जाता है रिक्शा वाला. एक टाइम था कि हाँ रिक्शा वाला तो नहीं लोन मिलता था. हाँ मे बी डब्बा वाला माइट बी हैविंग. और कौन है जो बहुत लो कम्युनिटी है, कॉपलर्स है, और ये साइकिल वाला है जो रिपेयर करते हैं बेचारे. हाँ ब्लैक स्मिथ है. आजकल तो ब्लैक स्मिथ मैंने कहीं मुंबई में तो नहीं देखा. दर्जी वाला इधर करोड़पति. You don't know, per day, not per day, I can say, per month he might be earning 3 lakhs of rupees. दर्जी वाला का बिजनेस ऐसी है. करेक्ट. आप तो मालूम नहीं, वो आपसे जो सामान वगैरह जो लेता है ना, in a day he might earn close to, if not exact, 50 to 60,000 आराम से वो कमाता है. हाँ, बिकॉज वो मेटल्स जो हमसे वो लेता है, आपको शायद किलो में 5 या 10 रुपए देता रहेगा. वो आयरन, वो स्टील को भी लेता है, वो बेचता है उधर 40 रुपया 50 रुपया पर किलो. हाँ अरे दोनों these are too good. I have my own cousin in Mysuru. Now it is Mysuru. They have the contract of taking the ship on breaking the ship. एक शिप को अगर तोड़ के बेचेगा ना, वो बोलता है नाना करके 3 करोड़ रुपया फायदा होता है. छोटा सा शिप में, बड़ा शिप है, 2-3 कॉन्ट्रैक्टर मिलकर उसको लेते हैं लीज पे. You know there was that विक्रांत ship which was totally dismantled and broken. फिर एक 2-व्हीलर आया, उसका नाम पे उसको डी करके लिखा रहेगा 2-व्हीलर पे. उस पे सब लोगों ने बोला उसी स्टील को लेके हम लोग ने 2-व्हीलर बनाया. तो कुछ नहीं दूर होता है, because that steel and iron is very solid. But now also go to Bombay docks. अगर आपको पुराना 50 साल पुराना 15 साल पुराना किसी ने शिप लिया है ना, to break and sell, they will earn double the amount because that is high quality steel of that one. और ये आप 2-व्हीलर 4-व्हीलर जो सेकेंड हैंड में लेके जाता है, पहला तो उसका इंजन था, फिर उसका स्पेयर पार्ट्स. सो दैट इज व्हाई आपको लगता है ना ये 50 है. चाय वाला का भी अगर एक ग्लास का 12 रुपया 10 रुपया कनेक्ट करेगा ना, इन अ डे यू विल अर्न मिनिमम 1000 to 2000 रुपीज नेट प्रॉफिट. मतलब 100 से वो 500 चाय एक ग्लास का बेचता है.
and the sugarcane juice wala. I think now juice in Maharashtra is very cheap. In one sugarcane sells minimum 5 glass. Each glass is 20, 100. जबकि वो 1 टन का मेरा एक फ्रेंड है, he's a farmer in somewhere in deep in Maharashtra. 1 टन का वो 1000 रुपए दे. 1 टन मतलब समझा? 1000 किलो. तो 1000 किलो में बाय का नॉट इवन 1 रुपी, वो तो 25 पैसा उसका कॉस्ट है. जबकि आपसे वो 20 रुपए लेते हैं. आप बोलेगा सर है ना सब कुछ स्टडी करके. दिस इज बिजनेस. दैट इज व्हाई इन माय फैमिली हम लोग तो टीचर्स ये जनरली ऑल, पर हमारे गौड़े कम्युनिटी वो दिस इज बिजनेस. अब जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी ओनली बिजनेस है ना, दे आर स्टडीइंग इट्स एन इंडिविजुअल ओनली बिजनेस. एंड इन तमिलियंस यू हैव अ कम्युनिटी कॉल्ड चेट्टियार्स, वो भी बिजनेस. दे आर इन मलेशिया में एक एरिया है दैट इज कॉल्ड एज मलाक्का चेट्टियार. वह है मलेशिया बट इधर ही है. माय ओन ग्रैंडपा he was in Burma till he was not very old for the death. By the time he came to India, he died. My dad too. So he was doing business there. Singapore, Burma, Rangoon, Myanmar. आज भी देखो Indian businessmen उधर बहुत. Why I'm saying? Because this is what this finance is. आप पता नहीं, nobody in your school or classes will teach you financial education. You know what is financial education? आप independent बनो यार. नहीं सर फिर 12th लिखना है सर, फिर सीईटी लिखना है सर, फिर जेई लिखना है सर. अरे कब कमाने लगेगा? कुछ कम्युनिटी है बच्चा को बोलते 10th हुआ 11th 12th कर साथ में पार्ट टाइम जॉब कर. हाँ करते हैं बच्चे. नहीं सर वो जेई लगाए ना सर, सुबह 9 बजे जाता तो रात को 6 बजे तक. अरे क्या 11th 12th नॉर्मल करो है ना. यू विल एंजॉय योर 11th साइंस इन योर कॉलेज एंड 12th में 6 क्लास लगा लो. एंड 12th के बाद आई माई सेल्फ आफ्टर माई 12th आई यूज्ड टू बी अ फुल टाइम टीचर. माई फर्स्ट सैलरी आई रिमेंबर I just completed my 11th. I used to teach English today. So 3,400 rupees per month I used to get it. मैं हफ्ते में 2 ही दिन जाता. What does it mean? This I'm saying around 10 to 12 years before. मेरा दूसरों को देखा किधर भाग रहा है, नहीं इधर ही. मैं किसी को बोलेगा तो they laugh ना. Because I was brilliant with my studies, so I started teaching very early age. तो जैसा मैंने economics complete किया, slowly I discontinued English. Then I jumped into economics. What does it mean? What does it mean? Financial independence बहुत जरूरी है. Till 12th it was my dad who was giving money for my studies. Till degree, masters, या जितना भी मैंने आगे किया, I didn't take a single money from my dad. Why? नहीं मैं अपना फीस भरूंगा. Means what? That is the confidence my students should have. तो अगर आपने अपना नाम से पैन कार्ड बनाया है, you can start with your parents' advisor, not for my advice. Mutual funds investment, monthly 500 rupees to start over. You finish your degree, you will be at a place where monthly dividend आपको 5,000 मिलता है. You know what is a dividend ना? उसमें से जो इंटरेस्ट आता है बहुत हो गया ना. और क्या चाहिए? In my lectures economics I teach, I am working for money, money is working for me. Student समझा? Every day I come here, take the lecture, I am working for money. Month end मुझे सैलरी. मैंने अपना 5 लाख है ना एक कंपनी में लगाया है और हर महीना मुझे 75,000 डिविडेंड मिलता है. Who is working? I am working or my money is working? My 5 lakh is working there. Is it active income or passive income? Yes. और जब बेटा बता रहा हूँ नहीं लिखते नहीं. Means this is what that Robert T. Kiyosaki का एक book है. Anybody read it? You know the Rich Dad and Poor Dad. पढ़ के देखो. थोड़ा सा आपको लगे क्या बोर्डिंग इकोनॉमिक्स है, बट आराम से पढ़ो. You will superbly understand what is you want to convey to you. है ना? चलो. Next one. The regular savings of SHG. Next one. Sorry, I took you to a small financial ride. The regular savings of SHG per day varies from regular savings of SHGs per day varies from 50 to rupees 200 or so. या 100 to 200 और सो ऐसे भी डाल सकते. और सो मतलब इट डिपेंड्स कम्युनिटी डिसीजन कैसा ले. नेक्स्ट, दिस कंटिन्यूज 100 और 102 whichever you like. और सो डालते ही समझ जाता है. that's fine. This continues for a period of minimum 3 years.
the saving of this continues for a minimum period of 3 years. After which, continue on, semicolon. SFG can approach a nearby commercial bank. SFG can approach a nearby commercial bank, thereby opening an account in the name of SFG. In the name of SFG. Next. Now then, we are about. Now then, the SFG can avail. Now then, the SFG can avail. What is avail? Ask for. Spelling क्या है? Mostly क्या ask if you are there anytime you are doubtful with the spelling, ask me. What was the earlier spelling? Avail. Avail a loan of higher denomination. A loan of higher denomination from that same bank. Last point. The loan will be sanctioned. The loan will be sanctioned. In the name of, इसका नाम क्या जाएगा? SHG. Read name of SHG. Read all this. Come back to me. Then I'll give you advantages. If you get a full-fledged question, I see like that, and it is easy for you to score marks as well. What type of functioning and function is always there. Correct. Right. Read the time. That is the time. We give you time for what? Good. Here or in school? Yeah. How much you got it out of 40? Oh, very good. So I sign it. Who is anybody 40 out of 40? Nobody. Same school कौन है तेरा? चल तेरा बता दे. और कोई मैं क्या? आपको नहीं मालूम. अरे it's okay. Industry को है. क्यों? Lost the marks or didn't study properly? अच्छा only marks disclose हो. Paper आदमी नहीं देते हैं. तो इसको क्यों नहीं देते? मार्क ऐसे टिक पास में होता है एक तो check करना पूरा टीचर से. Hey, which school is going for exam now recently? We just Completed just 40 marks. I heard in the month of August, maybe some schools are going for 80. Yeah, 60. 60. Listen. But we are almost closing our portions ना. इसमें ये last chapter है. वो consumer तो वो project है. And geography में globalization मैंने during the vacation लिए completed. I didn't do. Are you sure? ठीक है. फिर you want me to continue with economics after this chapter? हाँ, sure. एक बार economics खत्म हो जाता तो फिर geography में एक ही chapter रह जाए. कौन सा? Transport वाला. What are the solutions? Yeah. एक globalization जरा check करना. I remember in vacation I didn't do. नहीं किया तो ठीक है. I'll do it. क्यों I am not going for globalization ना? Because then geography का एक chapter remaining है. वो है ना manufacturing नहीं हुआ है ना? कौन किया? और दूसरा transport वो नहीं हुआ. Last chapter वो बाकी है. Transport नहीं किया. Last chapter हाँ.
रॉली मैम ने उल्टा ये किया है. That is only for. हाँ, that is it. तो एक काम करते हैं, आज मैं ग्लोबलाइजेशन ही स्टार्ट कर. हाँ, that is history. Making of global world is history. Globalization and Indian economics is economics. ठीक ठीक. Okay. Write down advantages. I got a clear idea. Only one chapter here and one chapter there. Then we are almost done for our academic year. Write down advantages. Point number 1. Yeah. बापरे, कौन सा चैप्टर क्यों है? ऑल क्यों चाहिए तुमको? पहले खत्म तो नहीं. Point number 1, advantage. SHGs are a dynamic idea, are the are dynamic idea or revolution of rural finance or revolution in rural finance. Underline the word dynamic or revolution. Or revolution in the rural finance. Second point. Poor and backward community. Poor and backward community gets an able opportunity or opportunity. 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 Able opportunity to enter self-finance sector. है ना? ये कुछ नया है. Self-financing or finance sector. Finance. Third, its functioning is not only for finance, but also helps in regular meetings and discussions. Regular meetings and discussion. And females get equal participation. Female, मतलब generally इसमें ladies ज़्यादा participate करता है. What is मुझे? टेलर्स तो मैंने आजकल देखा ही नहीं, सब रेडीमेड ने उनको खत्म ही कर दिया है ना. टेलर्स किधर देखते हैं सर? रेडीमेड गारमेंट्स. नेक्स्ट, ड्यू टू इट्स वाइटल इंपॉर्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट, एक थर्ड पॉइंट थोड़ा बड़ा हो गया है, उससे बाद में ब्रेक कर. ड्यू टू इट्स वाइटल इंपॉर्टेंस it is referred as, ये भी एक वर्ड है, the volume of textbook में दोनों में, building blocks of rural finance. Building blocks of rural finance. Change the pattern. Hence, a self-reliant, a conclusion है. अजय, hence, a self-reliant, highly motivated. On the spelling, poet. Motivated का spelling चाहिए? गलत लिखा देख ले. Highly motivated women groups. Women, MEN, not woman. Women group actively created under SH. That's all. Any question you want me to give? If not, तो बड़ा explanation है.
तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. Page number 203, there are 6 questions in fact. Just take any of the question you want me to give. In your volume. Two or three, है ना? Check. Volume question. Ah, what is it? Ah, why not? It has been dead by Jolly Madam here. I didn't touch that chapter. वो भी है. तो एग्रीकल्चर में भी ना. हाँ, मुकुल चौक. There is no choice like ICSC. Only economics का जो consumer है ना, वो project के लिए निकलता है. Geography में तो कोई नहीं. हाँ, water resources map के लिए है, पर थोड़ा सा theory आ सकता है, मैं ऊपर से पढ़ा. Water resources fully for map. Lifelines कौन किया? इधर नहीं किया. Last. हाँ. हाँ, तो फिर मेरे लिए फिर agriculture और manufacturing पढ़ लिए. Bridges with. Oh, golden quarter. Then you are right. So shall I start agriculture now or globalization? What do you want me to start? Economics आपके पास. Globalization. How many are not having geography textbook? Tell me. Not having. Are you having economics? Then we will continue. Why? Volume. It's okay. फिर यही डाल दो. It's a very interesting chapter. Agriculture, sir. NCERT. ठीक है. ये देखो, ये चैप्टर है ना, फाइनेंस के साथ कनेक्टेड है. So we will finish economics once and for all. Then you don't bring economics at all, ना? और क्या? The last chapter. फिर हम लोग ज्योग्राफी के साथ ही करेंगे. When is the project? Next week. Which chapter? Agriculture and minerals. But minerals तो मैंने खत्म कर दिया. हाँ, तो इसलिए. चलो, मुझे कोई इशू नहीं. ठीक है. Hey, right, agriculture. It's a quite a simple and interesting chapter. And finish it off. Agriculture ही कर रहे हैं because they are their school projects. So I feel. हाँ, वो कर लिया. I know these girls might have moved to me. मुझे मालूम था next month का problem. ऐसा दूर बोलते teachers हैं. Already I'm little bit tense. Today for the first time I jammed into one of the mic. उसका छोटा सा mic था, मेरा ही थोड़ा सा t-shirt पर कुछ. Broke the signal getting late. वो पागल signal था, suddenly break मारा. और मेरा गाड़ी इतना heavy है. ये था उसका गाड़ी पर. वो क्या? मुझे थोड़ा सा हुआ है, but more than me I am bothered. ये पहले बार इतने सालों में मैंने अरे उसका गलती नहीं था. उसने मतलब सिग्नल में ये मैं तभी नहीं पहना. So last 2 weeks when I'm out of Bombay and come back ना, one was viral और भी है finance ये वो. I feel some astrology related issues going on. आज मैं सोचते हुए गाड़ी चलाई. ये भाई साहब ने तुरंत गाड़ी कोई तो छोटा गाड़ी था. दोनों बाप और बेटे एक कोई जाके रोड पे गिरे. Now look here, I'll explain this chapter. No need to take your books, nothing. Listen first, then it automatically goes. In ICSE geography, many people miss this module because उनको लगता है काफी boring है. क्योंकि agriculture उनके पास 4 chapter, आपके पास एक ही chapter. But portion थोड़ा बहुत मैथ करेगा और मैं notes इसको बहुत systematic देता हूँ. When I say the word agriculture, anybody knows it comes from 2 Latin words. Agro and culture. वो मुझे no wrong है. Latin word है. क्या है? Age अच्छा एगर बोलते हैं क्या? प्लस कल्चर. मुझे किसी ने बोला इसका मीनिंग क्या है? ऐसे लैंड
एंड इसका मीनिंग क्या है? वेरी सिंपल, आई आस्क यू, forget about you, even I have never landed myself inside that cultivating field. हाँ, एक दो बार गया है उधर का लेडीज पर मुझे माथा करो तो अरे ये मुंबई वाला इधर क्या करे, मतलब इस साइड से पता कर सकते, and walking on that small lanes on that field is also very difficult. Normally you are not allowed to wear your shoes or chappals because they believe that it is their god. हाँ, so normally agriculture for a Maharashtrian, we feel normally sugarcane, फिर कॉटन, फिर थोड़ा बहुत हाँ सतारा साइड सांगली साइड जाएगा तो वो चना और वो मिलेट्स, वो राइस ग्रो होता है, कोंकण में राइस ग्रो होता है. तो व्हाट इज एग्रीकल्चर फॉर यू एंड मी? मतलब कुछ नहीं सर, चैप्टर ये है ना. इफ आई सीन माय 12th पास स्टूडेंट टेकिंग अ ट्रैक्टर एंड राइडिंग, बोले यार सर ये क्या, अरे कुछ नहीं यार ऐसे. आई रिमेंबर टू वन ट्रैक्टर राइड. आप नॉर्मल रोड पे भी जाएगा ना, ट्रैक्टर पे बैठेगा ना, देन यू विल बी डांसिंग लाइक दैट ट्रैक्टर ओनली. उसका टायर तो ऐसे ही है, इट्स अ बम्पी राइड लाइक किया था. तो ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है, फिर किसी ने बोला नहीं सर बुल्लक्स भी है. आज भी महाराष्ट्र में मैंने कुछ फील्ड्स देखा है, एग्रीकल्चर इज डन यूजिंग बुल्लक्स. So what is agriculture for you and me? It is the mainstay of Indian economy. What is mainstay? आज भी हमारा जीडीपी का 40% contribution agriculture से आता है. And what I can say, employment, no doubt sir, good employment. Now the mechanization of agriculture after which revolution? Green revolution. Yes, India has become what? The granary of especially the south countries or southwestern or southeastern, we can say. Now this Ukraine, for last 3 years, all thanks to Putin, busy in war. Varna, Ukraine was the single small country supplying wheat to 90% of Europe. I mean, Modi ji is a smart businessman, sorry, our respectable Prime Minister. He used this occasion, हमारा जो wheat का जब cultivation season आता है ना, तो उन्होंने कल्टीवेशन के 3 महीने पहले ही पूरा वीट यूक्रेन के पूरा पार्टनर्स को एक्सपोर्ट कर दिया. दो फायदा हुआ, एक तो हमारा गोडाउन खाली हो गया और दूसरा हमको पैसे भी मिला. तो नया वीट कटाई करके कल्टीवेट करके रखने के लिए जगह भी खाली हो. So today I can say rice, wheat, sugar cane, you name any, we are growing. Because Maharashtra itself grows certain kinds of grapes which goes to France and Italy. For what? No doubt that this wine professor. है ना, सूला, what is it? The vineyard, is it? हमारा पब्लिक उधर फ्री में थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए निकल ही जाता है. What does it mean? So we are growing even all kinds of crops which are generally in the what, both commercial and business sector. I don't know Feb 14 for you guys what it is importance, but as an economics teacher I say Feb 14 is very important. Sir, Feb 14 को economics में क्यों पूछा रहे sir? You don't know what is Feb 14 is for? India exports 90% of the roses to London. But हमारे क्या वो कोई तो कम्युनिटी है वो लाठी उठी लेकर आता, आज कोई वैलेंटाइंस डे नहीं मनाएगा. मतलब तेरा पेट में क्या हो रहा है यार, वो मना रहा है ना. तो वो कुछ जो कम्युनिटी वाले आते हैं, ये हमारे क्या कल्चर के खिलाफ है, जो भी है. वैसे भी आजकल के नौजवान और नौजवानी जो करते हैं वो भी एक अलग बात है ना. So we believe Feb 14 is very important for a country like India. Roses, flowers, oils. You know olive, it is very good for your health. कोई इंडिया में ग्रो नहीं होता, बट क्रशिंग अभी मैंने सुना ऑलिव लेकर इंडिया क्रशिंग करता है ऑयल्स. So we have sunflower, groundnut, coconut oil. Are you understanding what I'm saying? Fine. So normally what we are going to explain first, I'll explain the meaning of this. Second, I'll be explaining the importance of this. Third, I'll be going some suitable climatic condition why India is generally for agriculture. Then आपके पास एक बड़ा चार्ट रहेगा 3 या 4 पेज का, जिसमें हम लोग ऐसा रहेगा वो चार्ट, एंड क्रॉप्स का नाम रहेगा, रिक्वायरमेंट्स रहेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन, importance and uses. So it is very easy. So we will divide entire crops into first food crops, then cash crops, and then normally commercial अलग रहेगा वो टी कॉफी.
There was a time when India used to not get food for its population. Can I say today India is suffering from food shortages? और भंडार लगा हुआ है. कौन सा कंट्री को चाहिए बोलो? India is ready to export tons and tons of rice and wheat. अभी recently India ने अपना बासमती राइस कुछ कंट्रीज के लिए स्टॉप भी कर दिया था. बासमती राइस आर वेरी, I still remember getting बासमती राइस in US. ये लाल महल वाला है. It is very costly. $75 का 5 किलो मिलता है. फिर हम लोग ने बोला नहीं, थाई राइस भी अच्छा है. मैंने खुद थाई राइस स्टार्टिंग में खाया जब स्टार्टिंग में. $40 में 5 किलो थाईलैंड राइस मिलता है. हाँ, वेरी कॉस्टली. फिर मैंने सोचा यार रेड लेबल नेक्स्ट टाइम यहाँ से 5 किलो मेरा बोरी में डाल के लिए तो. बट इट इज बेस्ट. इधर जो रेड लेबल मिलता है ना, रेड लेबल या वो रेड फोर्ट, उधर जो मिलता है वेरी प्योर क्वालिटी मिलती है. वही रेड कासल या कौन सा है, लाल महल बासमती राइस. ताज नहीं है, लाल महल. हाँ, इंडिया के एक्चुअली. Whether it is rice, whether it is wheat, or whether it is you name any cotton clothes, you will get the best quality there. I got a pashmina shawl from there. मेरा मॉम ने बोला उधर से लेकर आ. मैं इंडिया नहीं, उधर से लेकर आ. The dollar that I paid and then I compared that same shawl with India, I could have saved minimum $50. मम्मी बोले तो लाया ना, वो चुप है. क्योंकि इंडिया से बेस्ट लेदर, इंडिया से बेस्ट क्वालिटी यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है और बचा बचा आपको और मुझे मिलता है. So we are saying it is one of the single most sector which earns what? Which earns export earnings, which is in the form of forex. What does forex mean for you? Foreign exchange. देखो आज भी हम लोग अपना एग्रीकल्चर को उतना ही इम्पोर्टेंस देता है. हाँ, अभी थोड़ा मैकेनाइजेशन हो गया है, अभी थोड़ा हम लोग ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेकर आया. But then can we say our farmers are our bread earners? Yes. पूरा इंडिया को फीड करता है, क्या पता पूरा एशिया को भी फीड करता होगा. सर आगे जाके हम पूरा दुनिया को भी फीड करेंगे. उतना एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर. Is it age old business? Sorry, age old occupation? Yes. When the Mongolians came to India, they were not Aryans. Huh? They saw this Indus River and its 5 tributary and the floodplains. They initially started agriculture. So normally we were food gatherers, then we become food producers. Today, Indian farmers are so good, they compete with any other developed countries of the world with their quality and with their price. So this is what, no need to write, take your volume. If you do not have the volume, textbook तो है सबके पास, वो भी नहीं है. हाँ, तो सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना, फिर मैं वॉल्यूम लेकर आता हूँ सेकेंड लेक्चर में. It is 10 minutes are left. Write down only the introduction. हाँ, वो ब्रेक करके विदाउट वॉल्यूम काम होता है. The term agriculture. Why she is not finding? Then who will write for you? अरे वो 2-3 पेजेस दे दो ना दोस्तों. No, when I am dictating, you can sit idle. हाँ, तो एक काम करो, उधर से समझ ले. Let her go. The term agriculture, word agriculture, has been derived from two Latin words. The term agriculture has been derived from two, right up, ager, or you say ager, whatever she was saying. Ager and culture. इधर लिखा है ना बोर्ड में. Which means land and cultivation. Which means land and cultivation. Second point. In India, अभी एग्रीकल्चर बार बार मत लिखना, कैपिटल ए डालता है, ठीक है, that will reduce your work. In India, A, that is agriculture, is the single most
is the single most dominant sector. What do you write this one? W dot R dot T with respect to employment generation and GDP contribution. Contribution. A GDP full form? Very good. Contribution. ये लिखना है suitable factors or factors supporting agriculture, whichever you want. Suitable factors for agriculture. एक वर्ड ही है तो मैं थोड़ा सा उसको दो ही सेंटेंस में देखता हूँ. Fertile soil, suitable factors for agriculture. Fertile soil, come on, continue. Supply, ample supply of water. Ample supply of water. Continue. Bright sunshine, etc. Next point with Khatar. Historical support or setup. Setup. Since Vedic or Aryan we are doing agriculture. So giving factors. ये डायरेक्टली नहीं बैठता है, पर ठीक है, नहीं है उसमें नहीं इंग्लिश में तमाम. Then you write cropping seasons. Okay, what are cropping seasons? How many seasons we have? 3. Now what are they? Kharif, Rabi and Zaid. Summer, winter or wait. हाँ. Very bad knowledge people are here. वही तो है. What does Kharif means? From June to October. Wait. I'll clear the doubts. All are giving me. What are Rabi crops? ये नहीं आएगा? No. Sure ना? Snow में क्या Kolkata? Winter crops. And what are these Zaid? Summer. It is in between. ये बहुत short season होता है. ये होता है mainly rice. ये होता है mainly wheat. And ये in between है और mainly watermelon जो एक महीने के अंदर grow हो जाता है. Watermelon, muskmelon, cucumber, etc. So ये दोनों हमारा main season है. Kharif and Rabi season. क्या आएगा आपको भी आएगा. तो never say winter season, summer season and rainy season. Agricultural seasons अलग है. ठीक है? Next. बस. Suitable climatic conditions. अभी देखो ये मैं explain करता हूँ. It's almost 4 minutes a day, but I will not make you to write. It's on page number 70. इसमें 2 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आया है. Now look here, everyone just look here. I'll just explain it in a very small and sweet way. ये है पहला primitive subsistence farming. अगर आपको ये याद नहीं है ना, they've given one word which is called as shifting. What is shifting? Moving from to different places for Agriculture. Slash and burn सुना है? Yes, sir. It is also known as zoom. किसी ने बोला zoom, zoom नहीं zoom. मतलब एक टाइम आज भी मध्य प्रदेश अभी तो अभी गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया. Inside the jungles, the tribal community will cut all the green, very big मतलब trees. एक पैच सेलेक्ट करेंगे, उसको कट करेंगे और आग लगा देंगे.
क्योंकि वो जो ash है ना, it becomes the manure. And they'll do agriculture very smoothly, maybe for 4 months, 6 months, 8 months, maybe 1 year. जब उनको लगता है कि वो लैंड जरा अनफर्टाइल हो गया ना, they will leave that patch. They will select one more patch. उधर भी जूट, कटी, slash, burn. अभी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है. That is this agriculture. Because उनको मालूम नहीं था कि फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी कुछ है, उस टाइम पे तो था भी नहीं. So that is why it is primitive है, but subsistence है. But in those days population was less and the land were too many. So that is why. तो अभी समझा, अभी एग्जाम में ये कंफ्यूज होता है. दूसरा है it is intensive है but subsistence है. If you look at the word subsistence is common. Which word is not common? Sir, ये intensive क्या होता है? I said population is huge but land is very less. I said अभी 1 लाख people के लिए मेरे पास 2 एकड़ जमीन है. अब ये यूरोप रहेगा ना, they do vertical farming. You know what is vertical farming? Layer by layer. हाँ, वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा. Europe does it for long time. चाइना तो नहीं वो पता था, वो अलग अलग वो बेल्ट जैसा डालते हैं. चाइना तो एक साइड पर पिसिकल्चर रखता है, एक साइड डक फार्मिंग रखता है, दूसरा साइड पर फिर एग्रीकल्चर भी ग्रो करता है. अभी चाइना है सर, एवरीथिंग. So what is this word intensive? They will have such seeds which will grow at a very less time. अभी देखो आप लोग को कुछ बैच बनता है, कुछ जगह पर मैंने देखा इंटेंसिव कोर्स है सर. जो बाकी बच्चा 6 महीने में या 8 महीने में करेगा, ये बैच है ना 2 महीने में होते हैं. मतलब दे आर द प्रैक्टिस. You understand what is the word intensive? In less time I need to do. Problem is what? The population pressure. Problem is what? The land is less. But ये भी कौन सा फार्मिंग है? Oldie है, subsistence. So अभी now you understand the difference between primitive subsistence and, come on everyone. Everyone repeat first one. Second one. What is the other word for primitive subsistence? 50. What is the another word? Slash and burn. Whereas the intensive is not slash and burn. अभी उनके पास land ही नहीं है. अभी I don't know if you visit Japan or Japanese people का diet है ना, seafood ज्यादा है और land बहुत कम है उनके पास. अगर वो बोलेगा नहीं सर मैं only land का ही खाएगा तो बेचारा भूखा मरेगा. Why? Because that land is limited. तो वैसा नहीं बोल सकता. तो वैसा जैसा जगह अगर इंडिया में है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, लैंड कम है, तो वी विल डू इंटेंसिव है बट इट इज प्रिमिटिव. अभी ये दोनों फार्मिंग बंद है. क्लियर? नाउ लेट अस गो टू द वर्ड कमर्शियल. इधर आ जाता है अपना ग्रीन रेवोल्यूशन, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ना, हाइब्रिड सीड्स. And whatever the farmer grows is not for his own family needs. जो subsistence में करता है, it is for the market. You want to sell. देखो why Punjab and Haryana farmers are the super rich farmers? Okay. Because they go mainly for commercial. हाँ, cash crop ज्यादा है. देख जो wheat और rice जो पंजाब grow करता है शायद इंडिया में कहीं नहीं होता. Best of the best. That what is that? खुशबू वाला rice. Basmati rice comes from Punjab only. So that is purely commercial. नहीं मैं टेबल नहीं, मैं आपको 2-3 पॉइंट में इसको क्लियर करके दे दूंगा. अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक दो भी आएगा. हाँ, what is primitive farming, what is इसमें आता है distinguish. Purposely to confuse. Primitive subsistence and intensive. इसलिए मैं थोड़ा टाइम बताता हूँ. अभी सेकंड लेक्चर में मैं नोट दूंगा ना, ये क्लियर. And the last one is plantation. That I will mark and give you. What is plantation? It is a part of commercial farming. Acres and acres, only one crop. अभी best है tea. कभी गया tea gardens, coffee plantation. If you know the place called Coorg. Yes. It's called Switzerland of India. But climate is like that. Okay, so these 4 we will write and then we'll go ahead. Okay, sure. Thank you. I'll quickly rush over.
Write down and give that. Terrace farming में crop failure इसलिए नहीं होता because they are not normally food crops. They terrace मतलब to reduce the speed of the water burn. So normally it is those plants which can reduce and absorb that soil. Bas. We are not going to grow food crops on the terrace farm. अरे बाबा उसको कट किया ना उसी लिए तो terrace बोलते हैं उसको. There my main motto is to reduce the speed of the water. Hey, write down. Types of farming. Come. बहुत कम है. Because they do not over concentrate on agriculture. They believe in green farm. How many have landed to Heathrow Airport? Before you enter London, you can see acres and acres of only green pastures. Only. Abhi pata nahi, abhi haven't gone. Abhi one of my dear family is taking a flight tomorrow. They are coming from London. Whereas you come to Mumbai International Airport, that is the only airport where you see only jhoppadpattis and katras. Abhi London has gone lot of changes. Abhi Heathrow, the main airport of London. Types of farming. नहीं मतलब उधर का लाइफ कल्चर अलग है. झोपड़पट्टी इधर है, कोपर के नाम है, लेके जाओ तू तो लोकल है. ए माय डियर, चलो टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अच्छा यार वो थे तो वो इधर है ही नहीं है, मैं उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ. मतलब सिंस एजेस वी आर डूइंग एग्रीकल्चर. फार्म बीच अरे हमको ऐसे और बोन करे तो वो मुस्लिम की बहुत मैं गया गाड़ी नीचे उधर बहुत पड़ रहा है. इधर से 2 स्टूडेंट भी आते थे. आज है ना इसको थोड़ा सा हाइपर हो गया. क्या होता है? All good. Write down types of farming. Point number 1: intensive subsistence and primitive subsistence. Types of farming. Very good. We are starting with primitive subsistence farming. Please write this seriously. Exam में आता है. Primitive subsistence farming. लिखो. सर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? अभी जैसे primary sector agriculture, secondary they purposely asking so that they don't want to write them. इधर से message spread हुआ. I know we can read the eyes of the children. Very smart. इसने बोला एक काम का डाउट पूछते रहा मैं कैसे एंजॉय करते रहे. राइट नहीं तेरा है ये दोनों. primitive subsistence farming. First you write. सर हमने पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देता है लेकिन only for agriculture. Out of all the sector, agriculture आज भी 40% का employment देता है. IT sector 40% का employment कब देगा? Listen, hey, there is the doubt. What is he asking? Maximum employment agriculture क्यों है? Because there is no IT engineer और IT पढ़ाई वाला. तो कुछ काम धाम नहीं है तो फिर भी वो अंदर घुस के काम कर सकते हैं. इधर एनी स्किल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. तो इंडिया में गांव में कौन लोग है? रूरल पीपल ही है ना. और फार्मिंग आज भी मेन एक्टिविटी है. बिहार जाओ, पंजाब जाओ, यूपी चले जाओ, तमिलनाडु ऑल्सो लाइक वी हैव अ प्लेस कॉल्ड तंजूर. आज भी वो राइस के लिए सबसे बड़ा एरिया है. ओके महाराष्ट्र इंटेंसिव सबसिस्टेंस. Point number 1. No, primitive. Mainly practiced in. Now, we don't disturb. I have to give the shortest and the best notes. Mainly practiced in few pockets of India. Mainly practiced in few pockets of India. Few pockets मतलब बहुत छोटा एरिया में. Next, it is practice. I have to shorten the notes. I have to give only 4 points for this.
you only with the use of primitive tools. Only with the use of primitive tools. हाँ डाल दो like ये मेरा टूल थोड़ी है सर आपने तो बस slash दाव इसको बोलते हैं digging sticks seeds डालने के लिए digging sticks. This is more like that powder that you call it in Italy. Thou digging sticks and labor belongs to. इधर word. DOE. Thou the word. More like powder like old time. अभी नहीं मिलता. Thou here. Thank you for the help. Right. You're most welcome. Digging stick and labor are from same family. Labor बाहर से भी नहीं आते. एक family का labor था. Labor are from same family. Stick extracts. Next. Are from same family. Next. The next point. Agriculture is practice. You write A, capital A. Agriculture is practice only till soil retains its fertility. Only still soil retains only till retains its fertility. That's land. Soil. Retains its fertility. Soil. Soil retains its fertility. Next one, also known as slash and burn agriculture. Okay, write that word very carefully here. Slash and हाँ बाबा पहले ये तो लिख. Yes. Slash and burn. ऐसे लिखो. And shifting agriculture. Or shifting agriculturally. Next and the last point. ये primitive Last. now production is limited. Mainly for one's own consumption. Production is limited mainly for one's own family consumption needs. अभी read करके देखो. I've given the most simplest method of not method. What was that? One's own family consumption. Yes. Then you write intensive subsistence. Second one is intensive subsistence. Right up. Farming in those areas or those regions. In those areas where population pressure is high, farming in those areas where population pressure is high with limited supply of agricultural land. Limited supply of agricultural land. देखो पहले सेंटेंस में मैंने क्लियर कर दिया. What is this? Intensive, but it is subsistence. Second point. Law of inheritance. Here I have to explain. I'm writing that word, put it into single inverted comma. Law of inheritance. With TAK.
inheritance is commonly practiced or generally practiced for land ownership. You know whether story land ownership and division of land is also observed. Now, anybody could explain this and help me for this? No, I cannot. Because you talk from YouTube. Hey guys, look here. ये law of inheritance आप बता सकते हैं? देखो, in farmer, generally the land, for example, we narrate the story for this one. A single farmer having 2 sons, this is 10 acres, example of land. When after his death, both the son X and Y, I'm using today variables too much, getting how many acres? 5 acres each. Is it sizable for good agriculture? No problem. But these X and Y have their own 2 sons. 2 sons here, 2 sons here. What will happen to this land? 1, 2. 1 and 2. They will have their own 2 sons. Understanding what is happening to the land now? इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन. Come on, repeat. Fragmentation. क्या हुआ हमारा 10 एकड़ का लैंड? सर कुछ नहीं सर, टुकड़ों में बट रहा है. This is the problem with our Indian farm. अभी मेरा दादाजी के पास अगर 10 एकड़ था, Papa got 5 acres, for example. I will get 2.5. My son will get 1, and his son will get 0. मतलब क्या है? The problem is that law of inheritance. Law of inheritance तो पूरा मिलेगा ना. Law of inheritance हमारा law क्या बोलता है? Hindu law. When I teach this some students, according to Hindu Marriage Act, ऐसा है. Under section IPC so and so, there are 2 children for the papa, a girl and a boy. The girl should also get equal property like that of the boy, even if the girl gets married. अभी हमारे जो लंदन फैमिली आ रहा है उसका ब्रदर क्या कर दिया? They have good property in London. इसने उसको बोले होगा कि पूरा प्रॉपर्टी अपना नाम, बोला तू तो लंदन में रहता है, ये मामला है, ये थोड़ी होता. They are Maharashtrians. तो मैंने लगा यही साउथ में रहेगा ना. अभी मेरा जो प्रॉपर्टी है, the farm is on my name. पापा ने आउट ऑफ 30-35 लाख में सिर्फ 75,000 दिए. You know what my mother says? ये तो पापा का प्रॉपर्टी है ना. मैंने मैडम ये मैंने हाँ ठीक है. तो my sister comes, बोलती है घर कभी बेच रहा है. बोले क्यों? कि उसको 50% दे. बोले क्यों? ये तो फैमिली प्रॉपर्टी है. बोले पूरा लोन तो मैंने भरा. तो क्या हो गया? पापा जब जिंदा थे कभी खरीदा तो ये फैमिली प्रॉपर्टी. And she fights with me legally also. जब भी बेचेगा ना 50 लाख मुझे दे दे, और चल 7 लाख दे दे. बोला रुकना यार, मुझे बेचना नहीं. अच्छा ठीक है, जब भी बेचने का बेच, बट मुझे 60 लाख रुपए. Sorry. What does it mean? In South now, the girls are equally given the property, and that is a good thing. And Maharashtra I've seen, शादी हो गया, बच्चा है, फिर क्यों आगे तुम लोग. और ये लड़का क्या बोलता है? तू तो लंदन में रहती है, तुझे इधर का. अरे, she is equally gifted like you, and in fact that boy doesn't work anything. ये लड़की ने अभी तक लंदन से रहकर पूरा प्रॉपर्टी का बाकी सब कर सके है. And they are fooling that girl. बाकी states राजस्थान. वो मैं कह नहीं सकता. तो रेट But- का होगा ना. अभी तो पूरा इंडिया का कुछ तो I will not say. मैं एक simple example बोल रहा हूँ, that is law of inheritance. Then what is this division of land? ये देख. तब इसका solution क्या है? किसी ने बोला सर 2 बच्चे से ज्यादा मत करो. सर बच्चों को प्रॉपर्टी मत दो. ऐसा तो शादी मत करो. हाँ, ये भाई सबका ज्यादा चल रहा है ना. तो simple what the government of India has done, where is the duster? Look here. ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है. We have erased all the boundaries. महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता है let us have a cooperative farming. What is this word cooperative farming? Let all the family members together do only one farm. Let that farm be 10 acres only. फायदा किसको है? सबको है. इंस्टेड ऑफ दैट एक छोटा-छोटा पीस में मैं 2 वेजिटेबल्स डाल रहा हूँ, वो फ्रूट्स डाल रहा है और बोलता है तेरा ट्रैक्टर इधर आया ना, मैं हाथ तोड़ दूंगा.
ट्रैक्टर इतना बड़ा है कि उसका जमीन के अंदर घुस भी नहीं सकता है, उतना छोटा है हमारा जमीन। So for that type we are going to have which agriculture? Intensive subsistence. अभी समझ में आया? So main root cause किधर है? Fragmentation और root cause किधर है? उसलिए आजकल मेजॉरिटी प्रॉपर्टी है ना, ये मैंने देखा है, they buy this flats, they buy gold, they buy what shares and debentures etc etc. और मुझे अभी भी याद है this last days of the parents, children are crying, but crying for what? पापा ने will नहीं बनाया ना, पापा जाने से पहले कहाँ कहाँ किधर है बता के जाओ, पापा बोले आओ जिंदा रहोगे, कुछ जलेगा बट पहले बता दे। And if it is a sudden death, then problem. So this is the problem in India for which we are practicing which agriculture? Intensive primitive agriculture. Subsistence. Sorry, write the next point. I'm putting my heart and throat and explaining. They are coolly doing their activity. Very good. Next point. Due to such division, say, due to such divisions, there is enormous pressure. Careful with the spelling enormous. Over the limited land. There is enormous pressure over the limited land. Next and the last. So, solution to the above. So, but this quote. ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा है. Problem is, आप इसको चाहे तो एक IADP करके है, बट आपको अभी नहीं आ रहा है. आप लिख लो इंटेंसिव, शॉर्ट फॉर्म लिखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग. एक्चुअली हम लोग 12th में सीखा था IADP, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये अलग है, बट अब ये लिख लो ISF, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, खत्म. Then you write commercial farming. That's related to the ISF. सर आपने इंटेंसिव के बारे में बताया तो ये प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन है. लैंड लेस है, पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा है. नेक्स्ट इज कमर्शियल. As the name suggests, in between how much to talk? Better. She is a adult citizen of India. I was growing to be a. Oh, yes. Commercial. As the name suggests, farming mainly for earning profits. Farming mainly for earning profits. Bracket में commercial. Using modern techniques. Using modern techniques. Come on. HYV seeds. What is HYV? Variety. Correct. HY Seeds. HY seeds HYV. Irrigation facilities. Irrigation मतलब dams के through पानी. Irrigation facilities, etc. For pesticide, वो सब हम लिख सकते हैं. Next. Irrigation facilities, etc. Green revolution in India is the direct outcome. Green revolution in India is the direct outcome of CF. What is CF? Very good. CF. there is a direct Outcome. States like Punjab and Haryana. Next one. मैंने तो agriculture में भी capital A डाली. States like Punjab and Haryana, UP and Madhya Pradesh. States like Punjab and Haryana,
UPMP, correct. Do mainly undertake this one. बाकी स्टेज भी है ऐसा नहीं कि हाँ do undertake this one. Last point. The only problem is the only problem is high use of capital. बहुत ज्यादा पैसा लगता है इसके लिए. So only नहीं कांग्रेस में भी बहुत सारा पैसा कमा पड़ता है. So only rich farmers can practice. अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ. How many are able to write MC right now? ये बोर्ड एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है. Distinguish between intensive substance. समझ गया. Primitive subsistence and intensive subsistence farm. अभी डाल दो ऐसा बोर्ड ऐसा कर दो. इसे लिखने का जरूरत नहीं. एक साइड में लिखो primitive subsistence, दूसरे साइड में लिखो 4 पॉइंट विद 1 एग्जांपल. पहले लिखो मीनिंग, सेकेंड लिखो why it is done, where it is done, how it is done with example. 2 मार्क का 1 पॉइंट आधा मार्क का इधर 4 पॉइंट लिखा तो 2 मार्क मिले. Primitive and intensive दोनों साइड बाय साइड लिखो. Hey, volume में है आंसर. What is the name? Sorry, take your word. It is there somewhere. I have seen. Don't copy paste. What my dear friend last person will be correct. Which I am in you. Which one? Happy dear. You can use it. Where you all use this? How was our SST? Good. Marks बता मुझे. See you back. Right कर यार. हाँ जी. मैंने दिया ना. तानिका ने पूछा ना. मैंने जो नोट दिया वहाँ ठीक है. First meaning, why it is practiced, where it is practiced, how it is practiced with example. ठीक है देख पहले लिख तो से. Hey, come on, he has already made the point. Sanika is nowadays behaving too good. To take a selfie and post it with the UP Instagram. Pick up his story as usual. लेकिन मेरा नोट से लिख वो एक पेज को 4 इसमें डिवाइड करता है. तब चीजें क्या है आगे तू तो कितना में हो जाए बट सर इसके बड़े कौन सा लिख दो मैं कोई मीटिंग हो तो अभी आया था. गाइस कम ऑन राइट. पहला मीनिंग लिखो मैंने दिया है. व्हाई इज ट्राइंग फॉर मी. So the primitive practice on small patches. इधर क्या है. For example, for additive, practice on big patches of land. ओके इधर लिखो. रुको ए देखो मैं आइडिया दे रहा हूँ. मीनिंग कैसा लिखने का. मेरा पहला सेंटेंस व्हाट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस. हाँ इधर लिखने का लैंड लिमिटेड पॉपुलेशन हाई. So in this slash and burn, only modern methods of सबसे मेरे पहला पोजीशन देखो. this is I'm also saying. The areas of 4 points for primitive and big. देखो जितना पहले लिखो.
I told you ना, I was looking at that college in university. ये कैंटीन का बंदा है, वो मेरे से बड़ी छोटी है, फिर कल्याण में कहीं तो काम करता है, हर 2 दिन में कॉल करेगा, मैं उसको फोन अटेंड करता, बेचारा कैंटीन में काम करता है, तो 1500 मेरे से लेने का, तो जब से मैं बॉम्बे आया है ना, रिटर्न आई एम नॉट टेकन इन वन फोन ऑल्सो, भाई साहब ने व्हाट्सएप डाला, सुन कहाँ रहते हो भाई, मैं करने के लिए, वेरी स्मॉल बॉय, गुड सेल्फ, तो मैं अपना टेंशन में रहूं क्या इसका बात करता हूँ, साहब जी क्या काम कर रहे हैं, अगर फोन good. My dear students are working on intensive and sir, you can point. कोई मेरे से पूछ मेरे से। अरे मैंने जो explanation दिया है, intensive वहाँ से points आता है, आकर good. अनिका, studies में ध्यान है ना बच्चा, पक्का 9th से आपने बहुत considerable changes देख रहा हूँ। I won't study by UPS. Hopefully PKM का announced August 19 है या 24. PKM का announced. Like last year मिला PKM B for 10th standard full state. नीचे रख. चलो लिखो. हाँ सारे teachers. Last year भी PKM बैठा था. Yeah, all. प्रोडक्शन में मत जाओ, इधर लिखो इंटेंसिव में लिखो कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, इधर लिखो कॉन्सेंट्रेट्स ऑन प्रोडक्शन, क्योंकि कम टाइम में हमको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देना पड़ेगा। तो मैं यार कौन सा स्कूल का एग्जाम चल रहा है आपसे? NHP है ऊपर चलो दो मिनट है सबसिस्टेंस आके इंटेंसिव आके प्रोडक्टिविटी, सर आपके ना डो लिखा है जो डो लिखा क्या रोल दाव है दाव DOE है DAO है और HOE अलग है। वो मैंने दिया ही नहीं वो डाउ मिक्सी कर दिया मिक्सी कर दिया टेंशन में था। ये क्या है स्पेलिंग क्या है ये तुम लोग ला ठीक है ये क्या है एक्सेप्ट बट पहले मीटिंग से था ठीक है You carry on with your own. तुम्हारा हैंडराइटिंग देखेगा ना ये तो फिर भी खूबसूरत है उसका। Carry on. Protection, yeah, this is correct. Protection is made for one's own family and goods. ये पहला ये चाहिए पहला सेंटेंस है ना उधर भी hey guys they have shown me also So for why husband right? So for why what are you right? देखो here population pressure they मैंने मीनिंग लिख दिया। तो इधर लिखो this is most ancient method, this is modern method. Okay, jolly finish karo, I have to give that plantation also.
ओनली नहीं ठीक है, बट थोड़ा सा पॉइंट्स को डिफाइन करो. Is he asking related to geography? Now he's asking for science. This is your work. कभी इससे क्या points लेके लिख रहा है? हाँ, बहुत जरूरी है. क्या है भाई? पास पॉइंट लिखा. लेकर. Let me see. अरे लेकर तो आया. नहीं. 4 + 1 exam. Look, she has written 5. Bring it here. So what kind of example? Intensive, you can write model machine. क्योंकि वो इंटेंसिव है ना दिया है. हाँ तो बैठो फिलहाल लेडी तू भी बीच में गायब करने किधर बैठो. आप भी इतने तूने आता था मुझसे. लास्ट टाइम मैं आया था. आई केम 4 o'clock. ये लोग ने 4 o'clock का कैंसिल और आई गॉट माय कजिन फुल टू कैनेडा. तो यहाँ से मैं इसे एयरपोर्ट था. तो क्या क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी आपको लास्ट में इसका पहले भी देखा है ना. इसका पहले वाले से बिल्कुल एयरपोर्ट पर गया 10 मिनट अपने कॉलेज वेरी गुड. देखो ये लिख सकता है ड्यू टू स्लैश एंड बर्न pollution is caused. No such pollution. This is how you manipulate with the points. I think of the picture that you are sitting that is clear. So good up here. Bullet पे बैठे. बुलेट की है छोटा है तो बुलेट की है. हाँ. Example practice in Madhya Pradesh वो लिखा है ना कहीं तो. Which regions it is practiced? और primitive लिखो practiced in old agricultural system. 5 points. Hey, I am reading his points. अरे David कहता ना idea ना. नहीं mistake रहेगा तो नहीं करेक्ट. Hey, he has written why is practice? How practice? देखो, this is for productivity. This is for production. Here आके less time for more production चाहिए. Low land. I am reading his points. No modern methods of farming are used. Modern method. Practice for a small group of. Practice for a large population. Because it is used with natural. It is used for. It is used with the natural irrigation facility. Using of the natural. It is used with. No use of fertilizer. Use of fertilizer. Pollution is called. अभी मैंने बोला था बात करने साथ. Pollution isn't it? Pollution isn't the cause. Sir, is Not caused by us. एक मिनट रुक जा. In this one, 8.6. हाँ. sir, primitive में लिखना है also known as slashing curve. Also known as burn and slash. एक वो point नहीं आएगा तो कहता है. क्या उन्हें बोला ना words को interchange करना है. It is known as here नहीं zoom नहीं है. Zoom भी वही है. इधर क्या देख रहा है? Vertical logo Europe में. एक ही रुक जा उसका पूरा तू जगह छोड़ के रखा है ये वाला इस पर. हाँ, what is yours? Practice on small size of stand. And then secondly, that is limited with population, right? Second point, fresh patch for plan. Fresh patch. ये भी क्या है? Just cancel साइड पर. So, practice panel in the maximum output of limited plan. Second, help of limited tools like downward flow, flow fertilizer. No. Yeah. Then intensity the high volume of fire. ये नया पॉइंट है किसी ने भी नहीं लिखा. बायोकेमिकल इनपुट्स यूज होता है. ये टच मतलब मैंने सुना है. Next, biochemical. Not fertilizers are nowadays. यार रुकना यार इधर मुझे हाँ मेरे दो ही काम है एक ही जन को पढ़े को दे सकते. Sorry. First, starting one. एक मिनट तू जरा पढ़ ले इस साल सारी पढ़ना. हाँ तो इधर आ जा ये इधर आ जा. Hey guys, listen. I am going to give some other assignments. We are almost done with the timing. And as he said, na everyone
नोटबुक में क्या करना है वो मैं पहले बता देता हूँ, बिकॉज मेनी चिल्ड्रन गेट अ नाउजिया, सर ये इतना पड़ेगा कैसा। आई विल मार्क एंड मेक इट वेरी क्लियर। आप लोग है ना सिर्फ फुड क्रॉप्स के लिए ना एक पेपर, फुल साइज पेपर या आपका नोटबुक में ऐसा टेबल बनाओ, इसी को टेबल बनाओ, डोंट फिल एनीथिंग। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? राइस, wheat, millets, bajra. Is that 2 minutes very important now? You can keep for 10 minutes only you. Then sugar cane, ticket, whichever I'm saying. Then tea and coffee. हाँ, ये सब आपके नोटबुक में ब्लैंक पेज में ऐसे ही कॉलम बना के रहना चाहिए इसका। हाँ, तो टिकट एंड आई सी ऑल दिस। टी एंड कॉफी द ओनली क्रॉप, बाकी तो फॉलो मिलेट्स भी करना पड़ेगा। इफ यू डोंट डू इट, डोंट कम फ्रॉम मी। थैंक यू। हाँ बोलिए।